Students, this is the question. Here we have to show that if n greater than -1, we have to prove the integral x to the power n multiplied by e to the power minus k square x square dx between the limit 0 to infinity is equal to 1 upon 2 to the power 2 multiplied by k to the power n plus 1 multiplied by gamma n plus 1 by 2. Hence, or otherwise evaluate integral of e to the power minus k square x square between the limit minus infinity टू प्लस इन्फिनिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिवन है कि n की वैल्यू अगर -1 से ग्रेटर है तो s की पावर n मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1/2 की k की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई गामा n प्लस 1/2 होगा. और ये भी इवेलुएट करना है e की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. So first we write the given integral, that is x to the power n multiplied by e to the power minus k square x square dx and between the limit 0 to infinity. Here we use property of beta and gamma function. So here we put k square x square is equal to t. Now we differentiate this with respect to t. So this can be written as x square is equal to t upon k square. So here we write x is equal to root t upon k. Now we differentiate this with respect to t, so we get dx upon dt which is equal to 1 upon k, and differentiation of root t with respect to t, this is 1 upon 2 root t. So this can be written as 1 upon 2k, and this root t goes to the numerator, so power of t is minus 1 by 2. So dx is equal to, we write here 1 upon 2k t to the power minus 1 by 2 and dt. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में k स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t पुट कर रहे हैं. k स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन k स्क्वायर. नाउ वी टेकिंग स्क्वायर रूट, सो x इज इक्वल टू रूट t अपॉन k हो जाएगा. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन k बिकॉज 1 अपॉन k इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 अपॉन 2 रूट t. So dx is equal to 1 upon 2k, and this root t goes to the numerator, so power of t will be negative, so this is t to the power minus 1 by 2 dt. Now we put here value of dx and value of this x in the this given integral. So here the limit first we evaluate when we take lower limit x equal to 0, so t is equal to k square 0 square, so this is 0. So corresponding lower limit x equal to 0, we get t is equal to 0. And if we take, when we take upper limit, that is x is equal to infinity, so we get t is equal to k square infinity square, so this is infinity square. So we can write this is infinity. आप देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो t की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि t इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसके प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, सो 0 इंटू के स्क्वायर 0 हो गया, तो t की वैल्यू 0 हो गई. व्हेन वी टेक अपर लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी, सो t इज इक्वल टू के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, सो इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, सो दिस इज हियर वी राइट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी. So we can write here. This integral, the given integral I is equal to, this is the corresponding limit x is equal to 0 to correspond t is equal to 0, and x equal to infinity, the limit of t is also infinity. Now we put here value of x, that is root t upon k. So this here we put root t upon k whole power n, and here we put in place of k square x square, this is t, so e to the power minus t here, and dx we put here, this is equal to 1 upon 2k and t to the power minus 1 by 2 multiplied by dt. Now we can see here power of k is n and here power of k is 1.
So power of k will be add, and k is constant term with respect to t, so it will be outside the integral sign. So this can be written as 1 upon 2, 2 is also constant, k to the power n plus 1. And in the integral sign we write here root t, that means t to the power 1 by 2, which is multiplied by n, so this can be written as t to the power n by 2. And here this is t to the power minus 1 by 2, and this is e to the power minus t dt. आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके प्लेस पे रूट टी अपॉन के सब्स्टिट्यूट किया है, इसकी होल पावर एन थी, यहाँ पावर एन हो गई, और ई की पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी सब्स्टिट्यूट किया है, और डी एस के प्लेस पे 1/2 के ई टी टू पावर माइनस 1 by 2 डी टी. Here 1/2 k is constant, so it will be outside the integral sign, and here k to the power n is also constant with respect to t, so it will be outside the integral sign. So k to the power n and k to the power 1 will be added, so this is k to the power n plus 1. And here root t, this is t to the power 1 by 2 whole power n, so power multiplies, so this t to the power n by 2, and here t to the power minus 1 by 2, and this is e to the power minus t. Now here we can see that base are t, and this is here the multiplication sign, so power will be added, so integral I can be written as 1/2 k to the power n plus 1 integral between the limit 0 to infinity t to the power n by n minus 1 divided by 2, and this is e to the power minus t dt. Now we can write this here, we can write this integral as I is equal to 1/2 k to the power n plus 1, and this integral can be also written as 0 to infinity t to the power, here we write t to the power, this is n by 2 minus 1 by 2, so here we write n by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2, here e to the power minus t dt. आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल में जो t की पावर है इसमें 1 by 2 ऐड किया गया है, 1 by 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, और ये आपका n by 2 minus 1 by 2 है, so this is n by 2 minus 1 by 2, and this 1 by 2 add and this 1 by 2 subtract. So n by 2 plus 1 by 2, so this can be written as, here this can be written as t to the power n plus 1 divided by 2 minus, and this 1 by 2, this 1 by 2, this is equal to 1, and e to the power minus t dt. So this is the definition of, by the definition of gamma function, we know that gamma n is equal to integral between the limit 0 to infinity of x to the power n minus 1 multiplied by e to the power minus x dx, this is equal to gamma n. So by the definition of gamma n, here this integral can be written as, from the definition of gamma function we write this gamma n plus 1/2, because we know that gamma n is equal to integral of x to the power n minus 1 multiplied by e to the power minus x between the limit 0 to infinity is equal to gamma n. So this is equal to gamma n plus 1/2. So आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल है ये गामा फंक्शन से, एक गामा फंक्शन की डिफिनीशन से ये इक्वल होगा गामा n plus 1/2 के. So we prove the first answer here. Now we evaluate the second one, that is given integral between the limit minus infinity to plus infinity e to the power minus x square k square x square dx. So first we write here, this is I is here, we write integral between the limit 0 to infinity x to the power n e to the power minus k square x square dx is equal to 1/2 to the power k 2 multiplied by k to the power n plus 1, and here you write this is gamma n plus 1/2. Now we can see here
Now we can see here, if you put here n is equal to 0, so put here n is equal to 0 because it is given that n is greater than minus 1, so we put here n is equal to 0. So in this integral, so we get here x to the power 0 e to the power minus k square x square dx is equal to gamma 0 plus 1 divided by 2 and 2 gamma k to the power 0 plus 1. So x to the power 0, this is equal to 1 multiplied by e to the power minus k square x square. So this gives e to the power minus k square x square. So this is e to the power minus k square x square dx is equal to gamma 1 by 2 divided by 2k. And we know that gamma 1 by 2, this is equal to root pi upon 2k. So suppose that this is the first equation. Now we prove the second one, which is given that integral between the limit minus infinity to plus infinity of e to the power minus k square x square dx. Here we use the property of definite integral, which is integral minus a to a fx dx. This is equal to 2 times 0 to a fx dx if f minus x is equal to fx. So this is the even function. आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई भी इंटीग्रल एफ एक्स बिटवीन द लिमिट माइनस ए टू ए है तो उसको 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बिटवीन द लिमिट 0 टू ए लिख सकते हैं. अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, दैट मीन्स एफ एक्स इवन फंक्शन. हियर वी कैन सी दैट दिस इज एफ एक्स. So fx is here e to the power minus k square x square. So we put here in place of x, we put here minus x. So this is e to the power minus k square minus x whole square. So this is e to the power minus k square x square. So this is equal to fx. So we can see that fx is even function. So we use here above property of definite integral. So this can be written as integral minus infinity to infinity e to the power minus k square x square dx. This is equal to, we write here, to integral between the limit 0 to infinity e to the power minus k square x square dx. आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन ये इवन फंक्शन है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो ये इवन फंक्शन है. इसलिए इस लिमिट माइनस ए टू ए को हम इस प्रॉपर्टी से 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी ले सकते हैं. नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन 1 वी कैन सी हेयर दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2k. सो फ्रॉम 1 we can write integral of e to the power minus k square x square dx is equal to 2 times root pi upon 2k. आप देख सकते हैं गिवन इक्वेशन 1 से इंटीग्रल की वैल्यू रूट पाई अपॉन 2k सब्स्टिट्यूट की गई है. सो वी कैन सी हेयर दिस 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज कैंसिल आउट. सो वी कैन राइट हेयर, so we can write here this 2 is cancelled out. So integral minus infinity to infinity e to the power minus k square x square dx is equal to root pi upon 2k. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.